Bismillahirrahmanirrahim, viewers. Assalamu alaikum. In continuation of our previous lecture, we will discuss today the Victorian period, and we had already informed our dear viewers that for the sake of convenience we have divided it into two periods: early Victorian period and later Victorian period. Before moving on to the different literati of this period, we will discuss major characteristics of this period. As had already been said and explained, that this period was predominantly had the characteristic of democratic and political upheaval. हम इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये वो दौर था जिसमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच एक ऑप्टिमम लेवल पर मौजूद थी। ये वो अप्रोच थी जिसमें लोगों ने ख़ुद को एक ऐसी दौड़ में पाया कि वो दूसरों से ख़ुद को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। इट वॉज़ द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट वॉज़ द पीरियड ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, it was the period of definitely the resulting pessimism, the resulting doubt, the resulting race, competition and love for wealth. तो इस love for wealth के नतीजे में ये हुआ कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड्स के या पूरे विक्टोरियन पीरियड्स के जो ट्रेंड्स थे रोमांटिक पीरियड के ट्रेंड्स से डिफरेंट हो गए। अब वो डिफरेंट कैसे हुए? एज वी हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट रोमांटिक पीरियड was the period of romance, in which the poets and other writers took lead in explaining each and everything related to their heart, related to the scenery, related to the nature, as we found out in case of John Keats, P.B. Shelley and the other two poets, for example Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. तो उनकी जैसी खसूसियात तो इसमें नहीं पाई जाती थी, लेकिन जो कि हमने देखा कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट थी उसके नतीजे में, ठीक है, उसके नतीजे में एक ऐसी पेसिमिस्टिक फ़िज़ा फैली जिसने एक ऐसी चीज़ को जन्म दिया जो डिफरेंट थी रोमांटिक पीरियड से, विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक पीरियड। वो कौन सी थी? वो थी रियलिज़म। इट वॉज द पीरियड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन परस्पेक्टिव ऑफ रियलिटी, not in perspective of emotions, sentiments and hearts. So whatever we have found out here is related to realism. And next characteristic, as we found that romance and realism both go side by side, as we found out the example in case of Robert Browning. Robert Browning had written a lot of poems. Those poems are named as dramatic monologues. In the dramatic monologues, the poet has the trend of explaining everything in perspective of reality and taking the emotions of the heart from his side. So these two things we find go side by side. As far as the realistic approach is concerned, the said writer Browning is in love with his wife, and in explanation of his love towards his wife, he never forgets his wife's approach, his wife's inclination towards her boyfriend. So here the two things can be seen coined in the poetry of Browning. इसी तरीके से टेनिसन और आर्नल्ड को देख लें तो इस पीरियड के ये जो तीन बड़े बड़े पोइट्स थे, इन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ और साथ में रोमांस का थोड़ा सा टच दिया, बट
रियलिज्म जो थी वो प्रिडोमिनेंट फोर्स थी इनकी पोइट्री में। तो जो बड़े पोइट्स थे वो टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नल्ड थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इस दौर के ग्रेट नॉवलिस्ट्स कौन से। हम बात कर रहे हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड की। अर्ली विक्टोरियन पीरियड में नॉवलिस्ट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी लिख दिया है कि सबसे पहले चार्ल्स डिकन्स हैं, WMP थेकरे यानी विलियम मेकपीस थेकरे, ये दोनों बड़े नॉवलिस्ट थे अपने इस अर्ली विक्टोरियन पीरियड के। नेक्स्ट वी कम टू द प्रोज राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। इन दिस पीरियड जॉन कार्लाइल, रस्किन, मकॉले एंड मैथ्यू आर्नल्ड। अगर हम मैथ्यू आर्नल्ड की तरफ ज़रा गौर करें तो हमें पता चलता है कि मैथ्यू आर्नल्ड एक अच्छा प्रोज राइटर भी है और इसके अलावा एक पोइट भी है। चुनाचे हम ये इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दैट along with these great writers there were a number of small or minor writers, poets, novelists there. For example, Bronte sisters were also there in writing novels. George Eliot, she was also there in writing novels, but she is included among the minor writers. But in the group of bunch of those minor writers, the Bronte sisters take lead. Bronte sisters take lead, and George Eliot is also in the forefront. So this was the period of stark change that we found in Romantic period, and here we find in Victorian period a realistic approach in the poetry, in the novels, and in the prose writings of different writers. Next, our topic will be to discuss poets of this period. कल हम इंशाल्लाह इन टेनिसन को, ब्राउनिंग को और आर्नल्ड को एक्सप्लेन करेंगे। टेनिसन ने कौन सी पोइट्री लिखी, ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी और मैथ्यू आर्नल्ड ने पोइटिक जो एलिवेशन दिया इन दिस पीरियड, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। रिमेंबर दैट all the three poets and all the other writers in their writings never ever shunned realistic approach, though they may have some romantic tinges in their creations, yet a realistic approach was predominant. Thank you very much. Allah Hafiz, and we'll come back tomorrow.